Assalamu alaikum and welcome to a very special episode of the CorneredTigers podcast. आज की इस podcast में हमारे पास बहुत खास मेहमान मौजूद हैं. उससे पहले just a very special acknowledgement to everybody who listened to the last episode और जिस तरह का हमें feedback मिला. We're very grateful and very humbled for it. और आप इसी तरह हमें support करते रहें तो इंशाल्लाह we'll be able to create a lot more engaging content. आज की पॉडकास्ट में हम इंशाल्लाह हाल ही की टेस्ट सीरीज को भी रिव्यू करेंगे, आने वाली ओडीआई सीरीज का भी प्रीव्यू करेंगे. इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे कॉर्नर टाइगर्स के रूह रवां, हमारे सीटीओजी मुन्ना भाई. We have Amar Khan with us as well. Amar bhai, you'll remember, was with us for the last episode. और आज एक बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, a very dear friend of mine, cover drive as well. जो ट्विटर पे हमारे सारे दोस्तों को पता होगा, इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव एनालिस्ट और हमेशा हक और सच की बात करते हैं. तो सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम. टेस्ट सीरीज के रिव्यू से हम शुरू करेंगे. बट मुन्ना भाई, आई लाइक फॉर यू टू स्टार्ट और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें दें कि टेस्ट सीरीज में अभी तक जो एक्सपेक्टेशन थी सीरीज से पहले और जिस तरह द वे इट अनफोल्डेड, 100 किस्म की बातें हुई ऑन द पिचेस, ऑन द परफॉर्मेंस. But overall, what you were expecting out of the test series and what you got out of it and what Pakistan got out of it. आप अपना perspective दें and then we'll get everybody to chime in on it. Assalamu alaikum and thank you so much Kenny for the lovely introduction. थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, कोई और मेरा introduction दे रहा है, first time हो रहा है, but it was a job well done. मुझे ना इस मौके पे ना एक्चुअली वो एक स्कूल में पढ़ा था, एक शेर याद आ रहा है कि गालिब साहब कहते हैं कि जी हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है. इसको मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, वगरना पॉडकास्ट में मुन्ने की आबरू क्या है, वो वाला सीन हो गया आज. तो लेकिन टेस्ट सीरीज के बारे में, यस एग्जैक्टली, इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग एंड टू अ वेरी प्रॉमिसिंग टेस्ट सीरीज, वेरी हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज इट वाज सपोज्ड टू बी. मेन हमने जैसा कि बहुत दफ़ा डिस्कस कर लिया कि पिचेस को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया गया तनकीद का, एंड राइटली सो. अगर पिचेस बेहतर होती तो शायद क्रिकेट भी ज़्यादा बेहतर हो जाती. एक चीज़ को मैं एक्नॉलेज करूँगा कि क्रिकेट वॉज वेल प्लेड फ्रॉम बोथ साइड्स. हमने अच्छी क्रिकेट देखी है सीरीज़ में, लेकिन रिजल्ट्स वर वेरी डिसअपॉइंटिंग तीनों टेस्ट के. मैं बोलूँगा ऑफ कोर्स द लास्ट वन बिकॉज ऑफ द लॉस दैट वी सफर्ड, जो कि नहीं होनी चाहिए थी. इट कुड हैव बीन अवॉइडेड. टीम सेलेक्शंस अच्छी नहीं थी और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि सीरीज़ से पहले कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सीरीज़ होगी. मुझे लाहौर टेस्ट से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी. मुझे पिंडी और कराची से रिजल्ट्स की ज़्यादा उम्मीद थी एक्चुअली, बट उसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ. एक चीज़ की मुझे खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया डिड कम with their test team over here and they played a complete series after a gap of 24 years. बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सक्सेसफुल सीरीज़ हुई. इट कुड हैव बीन आइसिंग ऑन द केक अगर रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस हो जाते और हम अपनी तरफ से अगर जो हमारी टीम मैनेजमेंट है अगर वो ज़रा प्रोएक्टिव होती और अच्छे जो है परफॉर्मेंसेस दे पाती. वील बेसिकली हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीरीज नाउ. Assalamualaikum everyone. I'll just chip in here. First of all, Kenny bhai, thank you for the intro. इतनी इज्जत तो घर वालों ने नहीं दी जितनी आपने मुझे कुछ 10-15 सेकंड में दे दी है. जहाँ तक बात है टेस्ट सीरीज की, तो as you said, postmortems तो चलते आ रहे हैं. मैं तो I've been trying to avoid talking about it at all. मैंने कुछ 2-3 दिन ट्विटर स्पेसेस का बॉयकॉट ही कर दिया था, लाइक स्पेसिफिकली क्रिकेट स्पेसेस का, क्योंकि वी ऑल सॉ किस तरह की रिएक्शनरी टेक्स आ रही थी. बट always good to be on Cornered Tigers, whether it's the website, whether it's the spaces, and now finally on the podcast. As far as I'm concerned, देखें, एक disappointing loss था, but I think इधर एक बहुत important point ये है कि यहाँ पे कोई hard reset और एक over reactionary जो हम लोग की थोड़ी tendency होती है as a fan base and as a cricket board, जो हमारी cricket board है, I really hope it doesn't get to that point. क्योंकि देखें, at the end of the day हमारे लिए एक reality check था. क्योंकि let's go back 2 years, हमारी टेस्ट टीम कहाँ खड़ी थी. We had a very bad 2020, which was followed by a good comeback in 2021, जहाँ पे हसन अली ने अपना एक कमबैक कर दिया था. फवाद आलम ने बिल्कुल फॉर्म हिट करना शुरू किया था. एंड देन we had some challenging matches, but at the same time हमें ऑस्ट्रेलिया के लेवल का चैलेंज नहीं मिला था. I think it's pertinent कि हम लोग ये याद रखें कि we might have lost that final match, but for a good chunk of that series and even that third match, we were competing on a very close level. मगर हमारे जो एक दो glaring weakness वाले areas हैं, that's where I think हम लोग मार खाए हैं, and I think those should be focused upon. उन पे discussion बिल्कुल बनता है. बट जिस तरह से हम थोड़ा एक पैनिक देख रहे हैं ना कि भाई हम तो टीम ही नहीं है, हम
ये क्या हो गया, ये कोई बेइज्जती हो गई है, where it's not, you're facing Australia, they're a top tier test side. अभी वो Ashes, I know home conditions में जीते हैं, मगर इतना dominant fashion में जीतना कोई छोटी बात नहीं होती है. You're facing a team that has, उनके एक एक प्लेयर का आपके कलेक्टर स्क्वाड से शायद ज्यादा एक्सपीरियंस होगा टेस्ट में. आई थिंक देयर इज ओनली लाइक, कह सकते हैं अजहर अली, जिनका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपकी टेस्ट साइड में. उसके अलावा दिस इज स्टिल अ रिलेटिवली यंग स्क्वाड. इवन आई नो बाबर कुछ 4 साल से स्क्वाड में, बट इवन देन the number of tests he's played pales in comparison to a lot of these Aussie players. Yeah, thank you, Khan, for having me. Thank you, Manabai. Thank you, CD. I think there are. I completely agree with everything CD has said here. I think he's nailed the point to the T. I don't see anything that was off, like wrong about what he has said. It makes complete sense to any rational fan out there. I feel like I'm seeing less and less of them these days, but it's very nice to see one I'm speaking to right now. In terms of what the series, jo series ki baat hai, I'll be honest with you, in my opinion, the reasons we lost, they were not surprising at all. Going into the series, I realized that we did not have good spinners. I did not expect green pitches. If the only thing I was probably surprised by was the performance of our openers. Because if you look at the past 5-6 years, or even 10-15 years, we have not been blessed with, or we have not had any good openers in Test match cricket. So to see what has happened here has not surprised me. And as a result, I'm not as disappointed as other fans. Obviously, it always hurts to lose, but in the grand scheme of things, I think we lost because of many different reasons. Pitches was one of them. The performance of certain key players was one of them. The mentality was one of them. Certain captains' decisions were one of them. And I think it is an amalgamation of all these factors which has resulted in a result that we've seen. But I think, having said that, it is a moment of reflection, it is a moment of learning, and it is a moment of introspection that the Pakistani team, that the Pakistani players need to go through. And we have had many generations before us जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया से जिनकी लाइफ में एक ऐसा मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसने उनको बिल्कुल तोड़ दिया था. So I think all things considered, we can talk about these factors in detail. But at the end of the day, what matters most is, for me, how these players learn from it, how these players look at each other and how they look at themselves, including and most especially Babar Azam's captaincy. अच्छा, अभी कैनी आपकी तरफ ही आ जाता स्पिनर्स वाला इस टॉपिक पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आजकल एक सीटी फोरम पे हमारे एक थ्रेड भी आजकल एक्टिव हुआ है जो सजावल ने बनाया था, हमारे मेंबर ने, द लैक ऑफ स्पिनर्स इन पाकिस्तान, विच हैज़ रेज्ड अ लॉट ऑफ कंसर्न एक्चुअली इन माय माइंड कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स हमें इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे. तो इस सीरीज़ के हवाले से भी ज़रा सा इस टॉपिक पे ज़रा सा डिस्कशन कर लेते हैं. क्या ये हमारे बेस्ट स्पिनर्स थे जो खेल रहे थे, और क्या हमारा फ्यूचर क्या है स्पिनर्स को लेके? क्योंकि हम लोग एक सब कॉन्टिनेंट की टीम है यार. अब आप श्रीलंका को देखें, इंडिया को देखें, अफगानिस्तान को देखें, बांग्लादेश को देखें, ये तो स्पिनर्स की इन्होंने लाइनें लगाई हुई हैं, और इधर हमारे पास हमें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा. नहीं, बिल्कुल मुन्ना भाई, बेस्ट का जो टर्म है ना वो थोड़ा रिलेटिव है. और जो स्पिनर्स वाला पॉइंट है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद सीडी. आई थिंक इट इज बेसिकली अ रेड फ्लैग. इट्स एन अलार्म बेल आपकी बजनी चाहिए कि यू हैव एसेंशियली अ डर्थ ऑफ promising spinners coming up through your first class structure. हाँ, थोड़ा कंसर्न इस सेंस में है आपका कि देखिए, नुमान अली और साजिद खान, अगर आप प्योरली स्टेटिस्टिक्स पे जाएंगे तो a lot of their performances merit them being part of your team. ठीक है, आप अगर ऑप्शंस की बात करें तो यू कैन टॉक अबाउट यासिर शाह, जो पिछले 8-10 साल से इज बिन हाउस होल्ड नेम इन योर टेस्ट स्क्वाड. अब इज ही पास्ट टू स्पीक, वो एक अलग डिबेट है. जफर गौहर, ऑब्वियसली समबडी, आपको याद होगा मिसबा के टेन्योर में he was, काशिफ भट्टी को निकाल के towards the end, he was identified as somebody who is ready to come in and take the reins of the primary spinner in your test team. But as it happened, मोहम्मद वसीम ने obviously नुमान अली के साथ नॉर्दर्न में बहुत closely काम किया था, तो he felt कि he was somebody who had years and years of experience in the first class circuit, और वो आके नेशनल टीम में अपने आप को एग्जिबिट कर सकते हैं. The South Africa series हुई, West Indies, Zimbabwe, I think we've had numerous tours, और एक series के ऊपर it's not always fair to write somebody off.
लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आपकी हर डिसीजन पे कोई एक विजन नजर आना चाहिए, भले वो लॉन्ग टर्म विजन हो, भले वो शॉर्ट टर्म विजन हो, एंड दैट्स नॉट नेसेसरली समथिंग वी आर सीइंग राइट नाउ। जो आपने सजावल के थ्रेड की बात की, उसमें जो लैक ऑफ इमर्जिंग स्पिनर्स नजर आ रहा है ना, वो थोड़ा कंसर्निंग है कि अबरार अहमद फ्रॉम सिंध इज प्रोबेबली समबडी यू कैन फ्लैग एज अ प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट, लेकिन उसका सैंपल साइज बहुत छोटा है। उसके अलावा क्या आपकी टीम को, क्या आपके चेयरमैन को, क्या आपके थिंक टैंक को जाहिद महमूद में वो कॉन्फिडेंस है कि वो एज अ स्पिनर खेल सकते हैं? आई पर्सनली, मेरे ओपिनियन में, आई थिंक श्रीलंका सीरीज इज नॉट अ बैड टाइम कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करना है विद द लाइक्स ऑफ जफर गौहर, विद द लाइक्स ऑफ जाहिद महमूद, to see if they have what it takes to be competitive at the test stage. I think that's a very pivotal stage to be able to do it. I think Babar is very big on a settled unit, तो वो haphazard changes करना नहीं चाहता और वो पैनिक बटन दबाना नहीं चाहता, which is understandable. But इस वक्त आपके पास सर्किट में, especially for red ball cricket, it's very concerning that we don't have match winning spinners. बस ये मेरा perspective था on that. स्पिनर्स पे मैं थोड़ा ऐड करना चाह रहा था। इफ द वे आई लुक एट इट राइट नाउ, हम जो भी आगे स्ट्रेटेजी देखेंगे, वी कांट गो इनटू इट एक्सपेक्टिंग कि हमें कोई यासिर शाह मिल जाएगा जो कि अपनी डेब्यू सीरीज में बिल्कुल कोई बाजी पलट लेगा और आपको सीरीज जितवा देगा। आई थिंक इट्स गोना बी अ स्लो प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप योर स्पिन स्टॉक, क्योंकि जैसे कानी भाई ने भी कहा, मुन्ना भाई ने भी कहा कि अभी आपके डोमेस्टिक लेवल पे वो फिनिश्ड आर्टिकल्स नहीं है और जो यंगस्टर्स है वो काफी अंडर कुक्ड हैं। जहां तक मैं देखता हूँ, मैं ये एक हसन चीमा ने कुछ दिन पहले ट्वीट की थी, ही बेसिकली पोस्टेड ऑल द स्टैटिस्टिक्स ऑफ योर स्पिनर्स एंड डोमेस्टिक पोस्ट द रीस्ट्रक्चरिंग। तो उसमें ऑब्वियसली नोमान और साजिद तो टॉप पे हैं, तो दैट्स द रीजन देयर इन द स्क्वाड, देयर द टॉप टू। उसके बाद आ जाता है जाहिद महमूद। जाहिद की जहां तक बात है, जैसे कहानी मैंने कहा, आइदर देयर जस्ट वेटिंग टू गिव हिम हिज ड्यू चांस, या तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं लग रही, क्योंकि हमने तो राजा साहब का तो पैगाम भी देखा था फर्स्ट टेस्ट के बाद कि हमारे पास एक लेग स्पिनर नहीं था क्योंकि यासिर शाह इंजर्ड था। मैं तो सोचा था यार, इमेजिन इफ यूर जाहिद महमूद, आप वेट कर रहे हैं और अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, और आपके चेयरमैन ही कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है, तो आई मीन दैट, आई होप इट डिडंट डेंट हिज कॉन्फिडेंस टू बैडली। बट जहां तक जाहिद की बात है, आई स्पोकन टू अ फ्यू पीपल जो कि कहते हैं कि while he is a decent spinner, उसका they don't see him cracking that test cricket as well, क्योंकि उसकी आई गेस उसकी पेस, उसकी एवरेज पेस थोड़ी कम है कंपेयर्ड टू मोस्ट ऑफ द टॉप टियर लेग स्पिनर्स। बट अगेन, wouldn't hurt trying anything out considering what we have right now. उसके बाद मैं आऊंगा जफर गौहर पे। जफर is interestingly not in the top 5 of this list, लेकिन there is a caveat there कि जो आपका बेस्ट सीजन था स्पिनर्स का, जिसमें नोमान और साजिद ने बहुत ही एक टॉप लेवल की परफॉर्मेंसेस दी थी, तो वो सीजन जफर ने मिस कर दिया था बिकॉज ही वाज इन न्यूजीलैंड। एंड उसके बाद हमने देखा जफर के साथ क्या हुआ, तो दैट वाज अनदर बिग फैक्टर। तो I think Zafar is right now your most bankable option in terms of drafting him into the squad, क्योंकि not like he has a good chunk of performances, he's handy with the bat as well, उसने काउंटी क्रिकेट में भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। In my opinion, going forward, आप श्रीलंका में एक तो आप जफर को टेस्ट आउट करें, एंड along with him either you give Zahid a run, or an alternative is कि आपके जो यंगस्टर्स हैं जो थोड़े अंडर कुक्ड वाले हैं, whether it's a Mubassir Khan, whether it's Abrar Ahmed, आप इनमें से एक पे गैम्बल लगा सकते हैं, बट ओनली इफ योर थिंक टैंक इज विलिंग टू स्टिक बाय देम द वे दे स्टक बाय सम ऑफ द अदर यंगस्टर्स। चाहे आप उसको स्क्वाड के साथ भी कैरी करें, जैसे अब्दुल्ला शफीक को एक साल आपने स्क्वाड के साथ किया था, आप ऐसे एक यंगस्टर को आइडेंटिफाई करके आप उसको स्क्वाड के साथ कैरी करिए, इवन इफ यू डोंट वांट टू प्ले देम इमीडिएटली। अच्छा, अगला सवाल मेरा प्लेयर्स के बारे में है कि इस अगर हम सीरीज़ में देखें, हमें पता है कि जो है पीसीबी ने ट्विटर पे फ़ौरन से और सोशल मीडिया के ऊपर फ़ौरन से हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स लगा के हमारी एज क्रिकेट फैंस हमारी नॉलेज को टेस्ट तो कर लिया कि जी ये हमारे बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स थे, अब्दुल्ला शफीक ने इतना स्कोर किया और बाबर आजम ने इतना किया, और बेस्ट बॉलर्स जो है वो शाहीन थे और ये नोमान अली थे, इन्होंने 9 विकेट्स ले ली। बट इट डजंट टेल द होल स्टोरी, स्टैट समटाइम्स दे लाई। आपके हिसाब से सबसे अच्छे जो पॉजिटिव थे अमंग ऑल द प्लेयर्स इन पाकिस्तान टीम, वो कौन से थे? और अगर आप बोलें कि सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स किन से हुई? For me, I think हमारी पिछली जो पॉडकास्ट थी, which I would
definitely urge everyone to check out because it was very, very nice. Abdullah Shafiq is the future. I will happily say that. I will get on my roof and I will scream that if you want me to. Abdullah Shafiq is the future. As far as our bowlers are concerned, Shaheen did disappoint me, but it was not because of his own fault. उसको इस्तेमाल भी different तरीके से किया गया था. मेरे लिहाज से कैप्टनसी could have been better Shaheen के लिए, एंड अगर वो थोड़ी बेहतर होती तो हम शायद शाहीन को देखते कि 9 की जगह शायद उसकी 12 या 14 विकेटें होती. आई थिंक जब शॉन टेट आए थे इन द ड्रेसिंग रूम तो हमने थोड़ी सी अप्रोच में डिफरेंस देखा था फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में. अगर आप देखें कि उसको यूज किस तरह किया गया था, तो आई थिंक दैट शुड हैव बीन a bit more pronounced. Naseem Shah, this is his career starting series. उसने खेला है, उसने he played like he was playing in his local cricket ground. उसने ही देखा कि कोई fans हैं, वो हैं, he was having fun out there. So that is something that I've missed. I'll be honest, मैंने वो चीज बहुत कम प्लेयरों में देखी है पिछले 10, 15, 20 सालों में कि अफरीदी था एक, but उसकी performances were not up to the fact. वो enjoy ज्यादा करता था और perform कम. One final controversial statement that many will find on my part is that I really, really enjoyed the way Imam ul Haq played. I was a fan of him. मैंने सीरीज शुरू होने से पहले स्पेस में जाके बोला था कि इमाम उल हक should play. Obviously पिचेस फेवर करी थी उसको, लेकिन उसमें इमाम उल हक की गलती तो नहीं है ना. मैं उसको ये तो नहीं कह सकता कि यार तू इन पिचेस पे भी बुरा खेलो. तो इमाम उल हक में मुझे एक चीज जो अच्छी लगती है, जो कि काफी लोग ओवरलुक कर देते हैं, वो उसकी डॉगेडनेस है और उसकी ग्रिट है. वो चीज शान मसूद में नहीं है. शान मसूद, आई लव शान मसूद. मेरी तरफ से शान मसूद के लिए, इमाम उल हक के लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई थिंक दे वेरी सिमिलर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ब्रिंग टू द पाकिस्तान टीम. लेकिन शान मसूद का छठा कमबैक है, इमाम का ये पहला कमबैक था. तो आई आस्क्ड बिफोर आई गेट रोस्टेड फॉर दिस, देयर इज अ रीजन व्हाई शान मसूद हैज बीन ड्रॉप्ड 6 times. I'm not saying he's a bad player. I'm just saying that he is. There's also a reason that he has come back 6 times. बेशक ऐसी बात नहीं है. He's a very willing player and he's a very classy player, technically sound player. And like I said, मुझे कोई मसला नहीं होगा अगर शान मसूद खेले. लेकिन इमाम को I think we should give a little bit credit. उसने allegations उसके खिलाफ जो लगती हैं, ग्राउंड में उसके खिलाफ जो नारे लगते हैं, जो उसको अक्यूज किया जाता है कि आपको बाबर के दोस्त हैं, आपको इसलिए टीम में रखा हुआ है, इंजमाम के आप नेफ्यू हैं इसलिए आपको सिलेक्ट किया गया है, उसके बावजूद उसने पहले टेस्ट मैच में चले आए. आई डोंट इवन केयर अबाउट द फर्स्ट टेस्ट मैच. सेकंड टेस्ट मैच में ही वाज एब्सोल्युटली ऑफल. आई विल ओपनली से दैट बिकॉज़ दैट इज व्हाट इट इज. लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में व्हेन हिज टीम नीडेड हिम द मोस्ट, एसेंशियली ही कैरीड अस अक्रॉस डे 4 एंड देन ही डिड अ गुड जॉब इन द फिफ्थ डे सेशन. तो उसका जो काम था ओपनर का, द जॉब दैट ही इज पेड टू डू, वो उसने 100% इफेक्टिवली कैरी आउट किया है. आपने बात की डिसअपॉइंटिंग प्लेयर्स की, so I've been very outspoken about this player, and I can already see the smiles on my fellow speakers right now. But I would have to say Hassan Ali. I would not say that he was a disappointment. I will say that he was an immense disappointment. But I cannot blame Hassan Ali for that. I do not blame Hassan Ali for that because Hassan Ali जानबूझ के गंदा नहीं खेल रहा. उसका फॉर्म नहीं है. जिसकी गलती है वो है बाबर आजम और वो है सिप्लान मुश्ताक. बिकॉज यू हैव टू रियलाइज कि अगर आप एक पोजीशन में हैं जहां पे आपको पता है कि आपका प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा एंड यू आर प्लेइंग अ मस्ट विन मैच. आई एम टॉकिंग ऑल्सो अबाउट द सेमीफाइनल. आई एम टॉकिंग ऑल्सो अबाउट the PSL semi-final, and I'm also talking about the third test match. जब आपको पता है एक प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, मेंटली ठीक नहीं है, फिजिकली परफॉर्म नहीं कर रहा, मेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, अक्रॉस डिफरेंट टीम्स, across different formats and across different management staff, तो उसको you should have the audacity and you should have the foresight कि आप उसको अपनी टीम की बेहतरी के लिए और सबसे जरूरी हसन अली की अपनी दिमागी और जिस्मानी बेहतरी के लिए आप उसको ड्रॉप करें. अच्छा अमर भाई, जो कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई एग्री विद द लॉजिक के मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, ओडीआई सीरीज में जैसे अभी हम उसका प्रीव्यू भी करेंगे,
I think there's a lot to say for कि आप किसी प्लेयर को ओवर प्ले ना करें टू अ पॉइंट कि ठीक है, एक कैप्टन दिखाना चाहता है कि यार दिस इज माय मैच विनर, दिस इज माय गन प्लेयर, आई एम गोना बैक हिम थ्रू हिज बैड पैचेस। लेकिन अगर आप ओवर प्ले कर जाते हैं उनको तो बाज वक्त उनका कॉन्फिडेंस उसमें रुइन हो जाता है। तो वो वाला जो लॉजिक है, आई थिंक इट अप्लाइज अ लॉट मोर टू द फोर्थ कमिंग लिमिटेड ओवर सीरीज। मेरा जो इस पे सिर्फ पॉइंट था, एंड अगेन वी आर ऑल एंटाइटल्ड टू आवर ओपिनियंस, एंड अच्छा है कि अगर हम थोड़ा डिफर करते हैं वो अपनी जगह, बट आई जस्ट थिंक कि उसका रेड बॉल का जो फॉर्म है वो पिछले 12 महीने में इतना आउटस्टैंडिंग रहा था कि अगर बाबर वुड हैव लेफ्ट हिम आउट ऑन द नोशन के वाइट बॉल में उसकी परफॉर्मेंस वाज अ लिटिल कंसर्निंग, तो दैट वुड हैव एंड लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि जिस जो उसको रिप्लेस करता उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जाती, तो आई थिंक वो बाबर के लिए एक बड़ा डिजास्टर्स एक रिएक्शन आता कि आपने फॉर्मेट मिक्सिंग की है और आपने वाइट बॉल के फॉर्म के ऊपर रेड बॉल में उसको उसका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया। बट आई जस्ट थिंक कि वो वाली कंसिस्टेंसी पे बाबर को क्रेडिट जाना चाहिए। बट आई एग्री विथ योर पॉइंट कि ओवर प्ले देम इन अ बैड पैच, इट अफेक्ट्स देम एडवर्सली। आई थिंक दैट logic should apply to the forthcoming white ball series. But Yeah. CD might have a little bit to add on this as well. यार जहाँ तक हसन की बात है, आई वुड बेग टू डिफर ऑन द पॉइंट ऑफ फॉर्म। आई एग्री विद कानी भाई इधर क्या रेड बॉल फॉर्म में एज सच मुझे इतना कंसर्न नहीं लग रहा था, बिकॉज इवन आफ्टर हिज सब पार T20 वर्ल्ड कप ही वेंट टू बांग्लादेश, व्हिच इज नॉट, दे डोंट हैव पिचेस दैट आर नोन टू बी कंड्यूसिव टू पेस, और उधर उसने 5 भी निकाल दी, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी। आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ फिटनेस इश्यू। अगर आप नोटिस करें, ever since Hassan Ali pulled up in the national T20, अगर आप लोग को याद हो जो सेंट्रल पंजाब के एक मैच में he pulled up while he was out there, and he just kind of just stuck on and kept playing even though it made absolutely zero sense with a T20 World Cup coming up. तो तब से उसकी लाइन और लेंथ में भी थोड़ा मसला रहा है और उसका एक्शन भी थोड़ा अलग लग रहा है। He's not running in as smoothly as he used to. So I think this is a case where we are repeating the same mistakes that we made with Hassan Ali in 2018, 2019, जिधर हमने उसको with an injury carry किया था, and we basically ran him into the ground, and then he spent a year and a half out doing his rehab. So what I don't understand is कि यार आज आपके पास compared to 4 years ago, again this was not correct even in 2018, मैं उसको डिफेंड तो नहीं करूंगा, वो भी हमने गलत किया था, लेकिन उस वक्त क्या रैशनल था कि आपके पास पेस बॉलर्स थे नहीं। चलो मान लिया फॉर अ सेकंड, इवन दो आई डोंट एग्री विद दैट लाइक नोशन, दैट्स नॉट अ गुड रीजन टू प्ले अ प्लेयर इंजर्ड। लेकिन आज आपके पास जब इतने ऑप्शंस हैं, आप क्यों फजूल में आप अपने प्रीमियर टेस्ट बॉलर को, व्हाई आर यू ट्राइंग टू रन हिम इनटू द ग्राउंड बाय मेकिंग हिम बॉल हाफ फिट? this is not going to serve you well in the long run, क्योंकि खाली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज नहीं है, आगे आपकी श्रीलंका के अगेंस्ट सीरीज है, आपके न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज है, and even though his white ball form is disappointing, he is the most experienced bowler you have in that setup as well. So whether or not he's in or out of form, you always want him to be a part of the squad, if not the 11. तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आई थिंक बाबर और टीम मैनेजमेंट दोनों को कंसिडर करना है कि भाई ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, इसको आपको सही तरह से मैनेज करना होगा। if he has a niggle, you need to rest him. Excellent point. I would just like to quickly add, that was an excellent point. You're not meant to overuse your players. One other thing I would like my captain Babar Azam and my head coach Sikhan Mushtaq to also consider is that you must also respect the conditions. Just like Australia respected by dropping one of the best bowlers on the planet, they dropped Josh Hazelwood because they knew that he would not be effective on these pitches. And as we all know, these pitches were not the same pitches that were there in South Africa or when Sri Lanka came to Pakistan or etc. So maybe Babar should have had the foresight कि यार उसको पता होना चाहिए था कि इन पिचेस पे हसन अली इस फॉर्म के साथ इफेक्टिव नहीं होगा. But maybe we overrate Babar Azam's game knowledge a bit more than we should. Who knows? इस पे मैं एक सिर्फ आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक अ डिस्टिंक्शन, और वो इसलिए बिकॉज ठीक है हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि आर शाइनिंग लाइट्स फॉर द सीरीज वर इजीली अब्दुल्ला शफीक एंड नसीम शाह. Your not so shining lights, I guess आप कह सकते हैं, Hassan Ali justified. Your spin attack was entirely negated by Australia. I think both Numan and Sajid, they'll acknowledge themselves they were very underwhelming. लेकिन एक शख्स जो I want to ensure कि उस लिस्ट में ना आए वो है फवाद आलम.
और ये इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, तो आई एम श्योर इस पे आप लोग भी थोड़ा पॉइंट्स देना चाहेंगे। बट मैं इस पे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, फवाद आलम का जो सिचुएशन है, एक बंदा इतने सालों की उसकी ज्यादती हुई एंड देन ही मेक्स सच एन एम्फैटिक कमबैक, तब आपको उसकी टेक्निक में वो फ्लॉज नहीं नजर आ रहे थे कि हिज हेड इज फॉलिंग ओवर। बट आई फाइंड इट अपॉलिंग एंड दिस इज जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन कि फवाद आलम के मुतालिक जिस तरह की बातें हो रही हैं आफ्टर 3 पुअर इनिंग्स, आई थिंक इट्स, आई जस्ट हैव नो वर्ड्स। तो इस पे अगर कोई और कंट्रीब्यूट करना चाहे। यार, इस पे हमने लास्ट पॉडकास्ट में जैसे डिस्कस किया था ना कि हमने माइंडसेट की बात की थी और फैंस की इम्पेशंस की बात की थी, इसमें वो फैक्टर भी थोड़े से ना आ जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो है फवाद आलम की हमें टेक्निक, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ किकिंग व्हेन अ मैन इज़ डाउन। अब उसकी टेक्निक के जैसे अब हमें सारी उसकी खामियां दिख रही हैं, जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया या उसने परफॉर्म नहीं किया 3-4 इनिंग्स में, तो हम उसके सारे फ्लॉज अब जो है एक एक करके गिनवाना शुरू हो गए हैं। हमें नज़र आ रहा है कि जी उसका सर गिर रहा है और वो लेट हो रहा है बॉल के ऊपर और वो स्क्वायर लेग की तरफ स्टांस लेता है। ये चीज़ें हमें तब नहीं दिख रही थी जब वो सेंचुरीज़ बना रहा था। उसने 4 सेंचुरीज़ बनाई थी, जब उसने 2 50s भी बनाई थी उसने, जब आपको बहुत मुश्किल सिचुएशन से मैच जिताए थे, तो तब हमें ये सारा कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि तब वो स्कोर कर रहा था, ही वॉज परफॉर्मिंग। अब हमें ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। आई वुड यूज़ अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, इट्स हिपोक्रेसी, कि आप उसको तब हाईलाइट कर रहे हो कि जब वो बुरा खेल रहा है या गलत खेल रहा है या नहीं खेल पा रहा। तो ये चीज़ आपको तब क्यों नहीं दिख रही जब उसने 13,000 डोमेस्टिक में रन्स बनाए थे? उसने आपके पिछले साल वो आईसीसी के टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में जो है वो फीचर हुआ था, तब भी नहीं दिखे थे। अब अगर उसको सिर्फ आप 3 या 4 इनिंग्स की बेस पे आप उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दोगे तो ये जाती है। अब आप बात करो रियलिस्टिकली क्या होगा उसके साथ, अगर अगर उसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये टीम, ये मैनेजमेंट, बाबर बीइंग द कैप्टन ऑफ दिस टीम, उसको ड्रॉप करेगा श्रीलंका सीरीज़ के लिए, क्योंकि अगर उसको आप ड्रॉप कर देते हो तो वो तो वैसे ही टेस्ट प्लेयर है, उसको तो वैसे ही साल में जो है हार्डली गिनती के मैचेस मिलने वाले हैं। अज़हर अली को भी जो गिनती के मैचेस मिलने वाले हैं। आपके दूसरे जो स्पेशलिस्ट टेस्ट प्लेयर हैं 2-3, उनको भी गिनती के मैचेस मिलने वाले हैं। तो इन लोगों के पास तो चांस भी नहीं होता ना कि ये किसी और T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट या कोई और ODI सीरीज़ खेल के वहाँ अपनी फॉर्म रीगेन कर लें। तो इनके पास और अब आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने टेक्निकल फ्लॉज अगर कोई हैं तो उनको रेक्टिफाई करके वापस आ जाए, क्योंकि ही इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम फवाद आलम इन द नेक्स्ट सीरीज एज वेल। ही इज स्टिल गोइंग टू बी यूजिंग द सेम टेक्निक दैट ही वाज यूजिंग ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन सीरीज। उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। अगर आप उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करते भी हो तो आप ये नहीं देखो कि वो स्टांस कहाँ ले रहा है, आप ये देखो कि व्हेन द बॉलर रिलीज द बॉल इन विच पोजीशन द बैट्समैन इज इन, तब उसको वहाँ से जज करना शुरू करो। उससे पहले उसकी क्या ट्रिगर मूवमेंट्स हैं, उसके क्या जो है इनिशियल रिएक्शंस हैं, उसको आप जो है डिस्कार्ड करो। वो जब बॉल रिलीज़ हो जाती है उसके बाद आप देखो कि वहाँ से उसकी टेक्निक क्या शुरू हो रही है और फिर आप उसको जज करने की ये। लेकिन ये तो कोई कोचेज़ इसके ऊपर ज़्यादा, टेक्निकल कोचेज़ उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा कमेंट कर सकेंगे। लेकिन मेरे एज बीइंग अ फैन ऑफ फवाद आलम, एज बीइंग समवन हु वाज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज इंक्लूजन एट द इंटरनेशनल लेवल इन द नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान, मुझे इस टाइम पे अभी मुझे इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है फवाद आलम के बारे में। ना मुझे उन लोगों से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता जो अज़हर अली को इस टाइम पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ हिज स्ट्राइक रेट्स एंड हिज अप्रोच टुवर्ड्स बैटिंग। ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट एंड ऑल दैट, एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस इन द लास्ट पॉडकास्ट एज वेल, के जो हमारे सीजनल फैंस आना शुरू हुए हैं और अभी जो रिसेंट फैंस आप इंटेंट का लफ्ज भूल गए मना भाई, इंटेंट का लफ्ज। इंटेंट और मैचअप्स और वो सारे जो है तो भाई वो इन पेशेंस की बात है। अब थोड़ा तो इनके साथ जो है मेरे ख्याल से जो है थोड़ी सी इनकी इनकी तरफ जो है लीनियंसी होनी चाहिए। they are senior pros of our team, and I think they are going to prove their mettle in the next series. Ajay, Munna bhai, मैं just before we go to CD and then Amar bhai on Fawad Alam, I just want to point out ये जो आपने kicking when a man is down वाला term use किया है, it's very relevant to our culture. देखिए ये जो culture हमने build किया है, it's very relevant to that. तो इसको यहीं तक मैं रखूंगा. We can move on. यार देखें, I'll come to Fawad in a second. अजहर अली वाली पॉइंट से मुझे एक I just remembered a funny reply I got on one of my tweets. तो मैंने ये फवाद आलम का बेसिकली किसी ने उसके नंबर्स वगैरह
mention किए हुए थे, so I just like quote tweeted it and I wrote a whole spiel about how we don't need to be reactionary, etc. right? तो नीचे एक शख्स ने मुझे रिस्पॉन्स दिया था कि कुछ 6 चेंजेस उन्होंने लिस्ट किए थे. One of those was कि मीर हमजा should be part of the test squad. और उसके अलावा एक था कि अजहर अली शुड बी रिप्लेस्ड बाय सऊद शकील. यार मतलब मैं सऊद शकील के लिए जितनी मुफ्ती प्रोपेगेंडा करता हूँ उसके घर वाले नहीं करते होंगे, बट हाउ कैन यू आफ्टर दिस सीरीज with any kind of justification say कि अजहर shouldn't be in the squad? यार मतलब बंदे ने आपको रन्स करके दिखा दिए इस सीरीज में, like, and again at number 3 he's your 5th highest scorer in your country's test history. तो यार ये जहाँ तक सीजनल्स और रिएक्शनरी फैंसी है तो this is all you need to see. वो मीर हमजा वाला तो मैं अभी तक बहुत हंस रहा हूँ. लाइक आई वेंट बैक टू रीड इट लास्ट नाइट एंड आई वाज लाइक यार ये कहाँ से बंदे ने सोचा है. हमारी स्पेसेस में ना ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई वो असद शफीक को क्या हुआ, वो असद शफीक को क्यों नहीं खिलाते ये लोग. तो इस तरह के भी लोग हैं अभी भी. तो प्लीज गो अहेड. वो डॉक्टर नौमान ने भिजवाए होंगे. उनका हर सीरीज से पहले ट्वीट आता है, स्क्वाड जब आता है ना, कि इट लुक्स लाइक इट्स द एंड ऑफ द रोड फॉर असद शफीक. पिछले 1 साल से ये सेम ट्वीट हर सीरीज से पहले आई है. खैर फवाद पे मैं ये कहना चाहता था कि फवाद के मामले में आई एम एक्सट्रीमली इमोशनल. यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा थोड़ा रैशनल होऊंगा, लेकिन अगेन उसका जैसे ऑलरेडी मुन्ना भाई सेड, उसका जो एक पार्ट टू अ कमबैक रहा है. आई वॉच दैट 163 ही स्कोर्ड इन श्रीलंका लाइव एंड देन आई एम लाइक यार ये बंदा गायब किधर हो गया. Then we saw he was stat padding, like he was like amassing runs in the domestic. यार he was scoring for fun. लोग उसकी टेक्निक की बात कर रहे थे. यार टेक्निक एक अनऑर्थोडॉक्स टेक्निक है, इसमें आप टेक्निकल फ्लॉ की तो बात कर नहीं सकते हैं. एक चीज आप बता सकते हैं कि यार देखें, मैंने एक कोट पढ़ा था सचिन तेंदुलकर का, ही सेड के यार जब आपका फॉर्म आउट हो जाता है ना, तो आपकी जो फुटवर्क है और रिफ्लेक्सेस है वो भी थोड़े ना इन द मोमेंट स्लो डाउन हो जाते हैं. तो जो ट्रिगर मूवमेंट फवाद के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट होती है टू गेट इनटू पोजीशन. वी सॉ दैट ही वाज हैविंग अ बिट ऑफ एन इश्यू जहाँ पे उसका हेड भी थोड़ा फॉल ओवर हो रहा था, बट दिस ऑल स्टेम्स फ्रॉम बेसिकली कि भाई मेरे 1-2 थोड़े ऑफ इनिंग्स चले गए. एंड इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट बैट्समैन. यार मतलब आप कोई भी बैट्समैन को उठा दो दुनिया की हिस्ट्री के जो बेस्ट आपके क्रिकेट में आए हैं, ऑल ऑफ देम गो थ्रू दिस. टेक्निकल अगर कोई इश्यू होता है यार, ही हैज मोहम्मद यूसुफ एज हिज कोच. हु बेटर, like who better than that to fix anything that he's struggling with. That's and I agree with Munna bhai, I'm not concerned about Fawad going anywhere. Babar himself realizes will know कि कितना important है ये squad को, because आप खुद नोटिस करें अभी इस सीरीज में हमारे लिए पॉजिटिव हमारे ओपनर्स रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट टाइम वी कुड से इट इन अ व्हाइल. तो आई एम नॉट वरीड. एंड एज फार एज द फैंस आर कंसर्न्ड, देखें यार उनका तो काम है ये रिएक्शनरी टेक्स देना. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? If you have an unorthodox technique, you are more prone to flaws in your batting. Does not mean inherently that your technique as itself is flawed. Orthodox technique में आपकी जो flaws होते हैं, you're less prone to them. That's why it's known as orthodox, because it does not deviate from the norm. It's not about the technique, it's about a loss of form. जो 1-2 सेंटीमीटर या 1-2 इंचेस वो लेफ्ट पे रखता था पैर अपना, या ऑफ पे रखता था, ऑफ साइड पे रखता था, वो चेंज हुआ है. दैट हैपेंस बिकॉज you are either less on confidence, you are either less on form. That affects his guard. He normally takes a center guard, but if you look at his dismissals over the past 3 test matches, जब वो आउट हुआ है तो उसका जो गार्ड था, that was on the off side. And he was not out of his crease at any point over the last 3 test matches. वो हमेशा क्रीज के अंदर खड़ा हुआ था. Therefore, वो जो स्विंग थी, जो स्टार्क की स्विंग थी, जो कमिंस की स्विंग थी, उसको वो नेगेट नहीं कर सका जिस तरह रिजवान ने किया है, जिस तरह बाबर ने किया है, और कुछ हद तक जिस तरह इमाम ने किया है. और जो इसका इमोशनल आर्ग्यूमेंट ये है, जिस तरह सीडी कह रहा था, आई एम क्वाइट इमोशनल. मेरा इमोशनल आर्ग्यूमेंट ये है कि आपने इस बंदे से 10 साल के चांसेस चोरी किए हैं, तो अब इसको कम से कम 10 सीरीज तो दे देना. बेशक अगर अगले 10 साल नहीं देते तो एटलीस्ट गिव हिम अनदर 10 series or 5 series or even another series for all I care. But he needs that chance. He deserves that chance. अच्छा Munna, just before we move on to the ODI series, मैं हमारे listeners को एक just quick reminder देना चाह रहा था on CorneredTigers forum. We would really appreciate कि आप हमें join करें. हमारा जो mission इस वक्त है वो 2-pronged mission है, to essentially create some positivity around Pakistan cricket and also to give back to our community. और इसके साथ ही जैसे आप mention करते आए हैं, we're working on some social endeavors as well, some charitable projects जिसमें हम लोगों की पोस्ट को मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं.
और जहाँ तक हमारे कॉर्नर्ड टाइगर्स का ब्रदरहुड है, हमारा एक फंड है दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स दैट एंड मेक श्योर कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा गिव बैक कर सकें. ऑब्वियसली हर कोई अपनी सतह पे कोशिश कर रहा होता है, एंड दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट ऑन दैट रिगार्ड. और आई इनकरेज ऑल आवर लिसनर्स कि अगर आप हमारा कंटेंट एंजॉय कर रहे हैं तो वो कॉर्नर्ड टाइगर्स के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह का एंगेजिंग कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस करते रहें. मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि हमारे कॉर्नर टाइगर्स के मेंबर्स इस मिशन पे साथ देने के लिए तैयार होते हैं. और अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हमने जितनी भी प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, अभी ये तीसरा शुरू होने वाला है, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से माह रमज़ान शुरू होने वाला है, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये वाटर वेल प्रोजेक्ट. उससे पहले अभी तक हमने ये मिसबाह हक का जो चिल्ड्रंस हार्ट हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें हमने कुछ डोनेशंस की थी. और उसके बाद आजकल हमारा एक ऑर्फन केयर प्रोग्राम जो अलखिदमत का है, उसमें हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो अल्लाह के शुक्र से अभी तक हमने काफ़ी डोनेशंस कलेक्ट कर लिए हैं इन दो प्रोजेक्ट्स के लिए. और अब हम वाटर वेल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं. उसके लिए हमें तकरीबन लगभग कोई 1,70,000 रुपये की ज़रूरत होगी. और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है आप लोगों की सपोर्ट से हम वो कलेक्ट कर लेंगे. करना सिर्फ इतना है कि आपने कॉर्नर टाइगर्स का फोरम ज्वाइन करना है. आप जो भी पोस्ट करेंगे हम उसको कन्वर्ट करेंगे इन एक्चुअल मॉनेटरी फॉर्म एज डोनेशंस टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट. और इसके अलावा अगर आप किसी भी और फॉर्म में हमारी सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ गेट इन टच विद अस. वील डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग आवर मिशन. इंशाल्लाह ताला ये एक सदका जारिया के तौर पे हम कुएँ को लगवाएंगे. बात सिर्फ यही है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी पोस्ट करते हैं वो सिर्फ पोस्ट चली जाती हैं, उसके बाद कुछ नहीं, आपको आपकी फॉलोइंग मिल जाती है, आपको आपका क्लाउड मिल जाता है. हम उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि अगर आप कॉर्नर टाइगर्स के ऊपर अगर कुछ पोस्ट करते हैं तो कम से कम वो सिर्फ वहाँ पोस्ट आपको उसके जो है सिर्फ हमारा एक रिस्पांस नहीं मिलेगा, बल्कि उस पोस्ट के ज़रिए से शायद किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो जाएगी. ODI सीरीज़ की तरफ चलते हैं. अब इंशाल्लाह कल से यह ODI सीरीज़ शुरू होने वाली है. क्या लगता है कि इस सीरीज़ में कुछ हम देखेंगे बेहतरी, कुछ ज़्यादा कम्पेटिटिव क्रिकेट देखेंगे, या फिर से वही कि हमारा कुछ बुरा हाल होने वाला है, या क्या लगता है कि क्या उम्मीद रखें हम? First of all, just wanted to praise Cornered Tigers. आप लोग ये जो initiatives ले रहे हैं, like this is making a difference in lives, जो कि which is a very big thing to be doing on social media. हम तो बहुत लोगों का content देखते हैं and all that, but this is truly something I think that's really special. जहाँ तक बात है ODI series की, first of all, I think सबसे पहले तो I think we all can agree कि it's kind of a relief कि हमें एक ODI सीरीज देखने को मिल रही है, because I feel like the format has kind of just died off post 2019 वर्ल्ड कप. हम तो मुश्किल से कोई सीरीज देखे हैं. लास्ट हमने वो 3 ODI सीरीज देखी थी against England, which I think none of us want to remember how that went. I personally think this is a chance for Pakistan to sort of experiment a little bit, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे ये ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है. एक तो उनको वैसे उनके कुछ प्लेयर्स चले गए हैं, बट ऑन टॉप ऑफ दैट टू कंपाउंड ऑल ऑफ दोस इश्यूज, ऑल ऑफ दोस एब्सेंटीज, स्टीव स्मिथ को भी इंजरी हो गई है, तो दैट्स गोना बी अ मैसिव हिट ऑन देम. बट अगेन यू कांट अंडरएस्टिमेट देम. हम तो खैर इंग्लैंड की सी टीम को भी नहीं हरा पाए थे, तो no need to get overconfident, but at the same time I think हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी एक ओपन माइंड रखना चाहिए. नॉट सेइंग कि आप बाबर शाहीन लोग को बिठाएं, वो तो सवाल बनता ही नहीं है. वो तो खेलेंगे. आई एम पर्सनली पॉजिटिव एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हम लोग हमारे मिडिल ऑर्डर के साथ क्या कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है. I know Iftikhar Ahmed was in line to make a comeback जब न्यूजीलैंड की सीरीज होनी थी, तो it'll be interesting to see if he's still on the minds of the team management. आज हमने देखा कि हैदर अली भी नेट्स में काफ़ी उसकी वीडियोस आई हैं. It'll be I've personally seen him as a long-term number 4. While I don't think he'll get a chance this series, I would love to be pleasantly surprised. I think this is a good chance कि हम हसन को थोड़ा रेस्ट दे दें और उसकी जगह हम let's say maybe a Dahani or a Wasim Jr. gets his opportunity. क्योंकि देखें at the end of the day आपको डेप्थ बिल्डिंग भी करनी होगी, because
वर्ल्ड कप में यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. अ प्लेयर, हमारा अगले साल वर्ल्ड कप है, व्हाट इफ समवन गेट्स इंजर्ड और हम यही स्क्वाड हमारा बेस्ट स्क्वाड हर वक्त लाते रहे. हमें एक डेप्थ भी बिल्ड करनी होगी और ओडीआईज में हम लोग इतना कम खेलें कि हम वो डेप्थ बिल्ड नहीं कर सकें. विल बी इंटरेस्टिंग टू सी डज आसिफ आफरीदी गेट his ODI cap or does Khushdil Shah play? I think personally that we should win this series क्योंकि देखें it's not a full strength 11. I would be thoroughly disappointed अगर हम लोग नहीं जीते हैं. I wouldn't necessarily say they're not full strength. ठीक है, हम मानते हैं कि with Hazelwood, Cummins, Stark, उनका first choice जो attack है वो available नहीं होगा. But recently उनकी जितनी भी bilateral series रही हैं for white ball cricket, I think वो ज़्यादातर rotation की तरफ ही जाते हैं. तो I think they have a lot of white ball specific players. जो Aaron Finch हो गया, Mitch Marsh type, जो कि specialize करते हैं उनकी white ball cricket में. तो they will come to the forefront. और उनको हम किस तरह टैकल करते हैं, it'll be interesting to see. I will go back to my original point जो अमर भाई ने किया था कि हसन अली को लेके बाज वक्त आप ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि you want to back a player through a bad patch, लेकिन आप उनको ओवर प्ले करके उनका कॉन्फिडेंस तबाह कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि at some point we do see a शाहनवाज दहानी और as CD said maybe even Wasim Jr. in it. But at the same time it creates an opportunity for somebody like an Asif Afridi, जो ठीक है, उसकी एज पे बहुत बात हो रही है. अनफॉर्चुनेटली इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30, and sorry, going towards 35 36 I believe at the stage. लेकिन उनकी जो नेशनल T20 में, पाकिस्तान कप में और फिर जो PSL में परफॉर्मेंस रही है, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने परफॉर्मेंस को चांस दें रिगार्डलेस ऑफ एज. तो ठीक है कि आसिफ अफरीदी has gotten a chance, and then Khushdil also has developed significantly, we saw across this PSL. So hopefully they will take these opportunities with both hands. But I completely agree. I think नवाज की वैल्यू, बहुत से प्लेयर्स जब वो अनअवेलेबल होते हैं तभी आपको उनकी वैल्यू को एहसास होता है. एंड विद इमाद वसीम आउट ऑफ द पिक्चर इन द वाइट बॉल, एट द वाइट बॉल स्टेज, आई थिंक नवाज का यही टाइम था to come to the forefront. It's unfortunate that he's injured, but hopefully with the Sri Lanka series to follow, it's not a very long-term injury and we can see him come to the forefront. Yeah, I'm personally looking forward to seeing Asif Afridi actually play this ODI series. I think he brings a lot to the table. और पता नहीं कहना सही होगा कि नहीं, but he is sort of an old fox. I think he has immense control over his line length. और मुझे लगता है कि as far as the economy rate is concerned, he can provide a great control, especially at the start of an innings. Playing 11 की बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से in general. क्या लगता है कि हमारा आपको Playing 11 क्या होगी? मुझे नहीं लगता पर्सनली ओपनर्स की इमाम को ये लोग टीम से अभी निकाल देंगे just on the basis of Abdullah's potential, which is quite high, of course. Imam के stats are too good, and you being a fan of Imam, I don't think that you will excluding him from your playing 11. No, that's a very good point. But the thing is that I am an Imam fanboy, but recently I've become an Abdullah Shafiq fanboy. So you asking me that question is a very difficult thing for me to answer. But I would not drop Imam, to be honest. Not at least for this series, but I would also make sure that Imam is hot on the heels of his ODI debut, even if it means that it's going to be at the expense of Imam ul-Haq. जिस प्लेयर को मैं देखना चाह रहा हूँ, मुझे काफी उससे impress भी किया है, and I'm a huge fan of his, Saud Shakil. There has been a lot of talk about how he fits into the team, where he plays, 5 pe nahi, 4 pe nahi, 3. He's a top 3 player. I have seen, I've heard, and top 3 में तो उसकी जगह बिल्कुल भी नहीं बनती. So personally for me, I would like to see Saud Shakil at number 4, and Rizwan at 5. Iftikhar is somebody who is also close to the national team. He's most likely going to be playing. Khushdil Shah. I personally don't see Khushdil Shah being a big part of the ODI team. I like Khushdil Shah, but I'm just not a big fan of his personally. I think I'd rather stick with Saud Shakil at number 4, Iftikhar at number 5. And if considering the recent injury crisis, I would not mind seeing Khushdil Shah at number 6. White ball mein, I don't think Hassan Ali has to play. I think the management needs to put their foot down and tell him, listen, you're not doing yourself any favor right now by playing any white ball cricket. So I would like to see Wasim Jr., Haris Rauf, and Shaheen Afridi, and Shahnawaz Hani potentially as well. So those
that's my thinking process. It's very frayed, which I'm afraid is because the fact that I don't even remember. मुझे तो याद भी नहीं ODI होता कैसे है. I'll be honest with you, it's been so long. I don't remember the way ये भी it's ठीक played. है. मैं मजाक नहीं कर रहा भाइयों, मुझे याद ही नहीं है कि भाई ODI होता क्या है. अब मैं मजाक कर रहा था. I was having a conversation with a friend कल, तो मैंने उसे बोला कि जिस तरह T20 के बाद टेस्ट मैच में हम गए ना, तो काफी नए फैंस आए थे. अप्रोच, इंटेंट, रन रेट कम है. अब वही फैंस मेरा ख्याल से शायद कल पहली दफा ODI देखेंगे, and it would be very funny to see how they react to how a one day is played. So I don't know. I'm one of them. बहुत से अमर भाई ने फ्यूचर बहुत देखी से है. शिट टेक्स फ्यूचर मिलने देखी. वाले हैं. मैं अभी से कह रहा हूँ रेडी हो जाए. हमने ऐसे ऐसे टेक्स देखने हैं ना कि हम मैं वही कह रहा था कि आजकल एक जरूर ट्वीट आएगी जो कि गुस्से वाली होगी और उसमें लिखा होगा कि हमने 500 रन क्यों नहीं बनाए. आप लिखवा लें. तो सर हमारा अमर भाई जो टेम्पलेट है ना कि विकेट्स इन हैंड और फिर आखिरी 10-15 ओवर में अटैक करें, वो टेम्पलेट ये T20 अवाम को जला देगा. एग्जैक्टली. तो मैं कुछ I don't know. I'll consider me a casual fan for tomorrow's or this one day series because I don't even remember what the one day looks like. But I am foreseeing a win for the Pakistan team. And on that note, I will just finally add one thing. I really like the new kit. किट वाली बात पे मैं एग्री करता हूँ यार. शुक्र है इनको वो फाइनली डिस्कवरी हो गई है कि आप लोगोस का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी किट को मैच करने के लिए, व्हिच इज मेकिंग इट लुक सो नाइस. 11 की जहां तक बात है, देखें ऑब्वियसली इन एनी अदर सीरीज शादाब और नवाज दोनों मेरे 11 में ही होते एट 7 and 8 respectively, but this is obviously taking into account that they're not available. देखें मेरी ओपनिंग पेयर है अब्दुल्ला फखर. Now this is what I want. What I expect is that Imam will play. Simple सी बात है यार. देखें I don't have anything personal against Imam, लेकिन if you have a power play strike rate of 63 since 2019 and this is आपको पाकिस्तान टीम में खेले हुए अभी 4-5 साल हो चुके हैं, आपको पावर प्ले का यूटिलाइजेशन करना होगा. अदरवाइज you're just going to find yourselves hitting below par scores. एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके पास अभी वो कुशन नहीं है अगले 10 आखिरी 10 ओवर में जैसा आप एक टाइम पे ODIs में एक्सेलरेट कर सकते थे, अभी वो नहीं हो पाता है बिकॉज यू हैव द एक्स्ट्रा फील्डर आउटसाइड. 5 फील्डर आउटसाइड द सर्कल होते हैं, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू एक्सेलरेट टू दैट एक्सटेंट जितना एक जमाने में होता था. मुझे याद है वो 5 ओवर का पावर प्ले भी आता था. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट I think that doesn't exist anymore. Again, this is stemming from the fact कि हमने इतने टाइम से ODIs देखा नहीं है, देखे ही नहीं है कि हम रूल्स भी अभी थोड़े बहुत याद करने में टाइम लग रहा है. यही हाल है. बैटिंग पावर प्ले होगा आपका. आई थिंक वो कैप्टन के पास यू हैव द चांस टेक इट. इफ यू डोंट फिर ऑटोमेटिकली वो 35th to 40th ओवर में आ जाता है. कानी भाई, I think it doesn't exist anymore, does it? अच्छा हटा दिया उन्होंने. ये देखो यार. यार मुझे honestly don't take my word for this. इसके बाद मैं खुद जाके गूगल करूंगा because I'm not sure. नहीं अंडरस्टैंडेबल यार. मुझे तो वो सुपर सब्स वाला जमाना याद आ रहा है कि वो तो नहीं होते अब. नहीं, मूविंग ऑन विद द 11th यार, बाबर एट 3 वो तो सवाल बनता नहीं है. देखें साउथ की जहां तक बात है, अगर आप उसको 5 पे खिला रहे हैं, यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू साउथ बिकॉज इट्स नॉट हिज गेम. 5 वाली गेम है नहीं उसकी, और यू आर डूइंग अ डिससर्विस टू योर टीम बाय प्लेइंग एन एंकर एट 5. आई मीन व्हाट टीम इन द राइट माइंड प्लेज एन एंकर एट 5? उसको अगर आपको खिलाना है आप 4 पे खिलाएं, बट माय प्रेफरेंस एट दैट पोजीशन वुड बी हैदर अली. आई नो वो आउट ऑफ फॉर्म है, बट आपको ये भी याद रखना है कि he'll have the cushion of Babar and Rizwan. If Rizwan plays at 5 and that's where he's playing in my 11 and Babar plays at 3, you know कि Heather is going to be playing with one of them at the other end and that changes the equation a lot. उसकी जितनी हमने अच्छी performances recently देखी हैं सब इन दोनों के साथ partnership करते हुए हुई हैं. Number 6 पे I would have Iftikhar. Number 7 पे Khushdil Shah. That's just my replacement for Nawaz at this point. Number 8 पे I would go with either one of Asif Afridi or Usman Qadir, क्योंकि both of them are as good as they come in terms of bowlers. Qadir का थोड़ा expensive होने की tendency है, तो I might lean towards Asif Afridi in this equation, but I think Babar की थोड़ी leaning Qadir की तरफ होगी because he's been with the squad longer and he has played before. Then Wasim Jr., Dahani, I don't really have a preference. Either one of them can come in for Hassan. Again, this is just, I think Hassan needs to set out, rehabilitate whatever issues he's facing, because I don't want to see
Hassan Ali being run into the ground, क्योंकि देखें T20 World Cup तो इस साल है, but अगले साल के ODI World Cup में Hassan is going to be extremely important, and I don't want a half-fit Hassan Ali going into a World Cup because we saw how that turned out in 2019. Then Shaheen and Rauf, so that's my 11. पिचेस के बारे में बात कर लेते हैं कि जो है क्या लग रहा है लाहौर में अब सारी लिमिटेड ओवर्स की सीरीज होने वाली है, ओडीआई भी वहीं खेले जाएंगे और T20 भी वहीं खेला जाएगा, तो क्या लग रहा है कि पिचेस कैसी होंगी कंसिडरिंग द फैक्ट कि पीएसएल के दौरान हमने जो पिचेस देखी थी वो काफ़ी अच्छी थी फॉर बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, तो यहाँ भी लग रहा है कि वही सपोर्टिव पिचेस होंगी एंड वी आर गोइंग टू सी अ गुड बैटल बिटवीन द बैट एंड बॉल। अब जहां तक प्लेइंग 11 की बात है, आई अंडरस्टैंड द फर्स्ट ओडीआई विल बी प्लेड ऑन द एग्जैक्ट सेम सरफेस जो इस सरफेस के लेफ्ट पे थी जिस पे आपका पीएसएल फाइनल हुआ था, तो you expect conditions to be relatively similar, pitch, the ball to stay a little bit low as you go towards the second innings, और ये थोड़ी overused pitches हैं तो थोड़ी flatten out होंगी, runs should be very easy to come about, और सिर्फ evening में dew का जो factor है वो I think थोड़ा उस पे weightage और discussion बनता है, because not so much in a 20 over game, but I guess more in a 50 over game that can have a huge impact on the team batting first, deciding what kind of score is a par score on that surface. तो आई थिंक इस पे एक डिस्कशन बनता है कि आपकी प्लानिंग उस हिसाब से हो कि अगर आप इफ यू आर बैटिंग फर्स्ट, तो अगर इस तरह के सरफेस पे अगर पार स्कोर लेट्स से 300 या 310 है, आपने फिर भी उसको उस ड्यू के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए आपको उस स्कोर को 330 335 पे ले जाना पड़े, तो आई थिंक यू हैव टू थिंक अबाउट दैट अ लिटिल बिट. I think it will turn. You expect the likes of Asif Afridi, Usman Qadir, Shadab Khan, even Khusdal to trouble the Australian top order and their middle order. That is what I think we'll thrive with. But I'm very hopeful क्योंकि Haris Rauf बिल्कुल टेस्ट सीरीज में नहीं खेला है, तो he should be well rested and thrive on these surfaces. And hopefully इनका जो थोड़ा सा स्टीव स्मिथ के जाने के बाद थोड़ा inexperienced middle order होगा ऑस्ट्रेलिया का, so the extra pace that we'll get with Haris Rauf can trouble them. And once we get through the likes of Finch, Marsh, Carey, and Labuschagne and get into their middle order, I think Pakistan has a huge advantage there. Yeah, I'm not expecting any rank turners. I'm not expecting anything. Pitches पे there's been so much that has been said. आपकी जो लाहौर की जो pitches हैं उसमें पाकिस्तान के टेस्ट मैच से 8 या 9 दिन पहले या 4 या 5 दिन पहले आईसीसी का हेड क्यूरेटर आया था, and that is a pure example कि 4 से 6 दिन में आप पिच को कुछ भी नहीं कर सकते. उसने आके वीडियोस बनाई हैं पीसीबी के साथ, उसने आके पूरी मीडिया में बात फैल गई थी कि जी एक फॉरेन क्यूरेटर आया है जो कि आपकी पाकिस्तान में पिचेस तब्दील कर देगा, सारे मसले हल हो जाएंगे. उसने आके पिचेस में 5-6 किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल की हैं. नहीं हो सकता. जो टेस्ट मैचेस में पिचेस थी, जो पीएसएल में पिचेस, पीएसएल की तो फिर चढ़े थोड़ी जान थी उनमें. कितना टेस्ट मैच खत्म, परसों खत्म हुआ या 3 दिन पहले खत्म हुआ, और मेरे ख्याल से कल आपका पहला मैच है पाकिस्तान. आई कैन सी बेसिकली high scoring games, but nothing in it for the bowlers. They'll have to toil hard just like they've been doing for the past 5 to 6 test matches. सर मैं तो कहता हूँ रैम्बो को बोलो ड्रॉप इन पिचेस यूएई से मंगा दे, हमारे लेफ्ट आर्मर्स वहाँ बहुत मजे करेंगे. खैर ऑन अ मोर सीरियस नोट, मतलब लग रहा है कि ये वही प्रेफरेंस रहेगी कि टॉस जीत के चेस पे जाएंगे और ड्यू का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. हमारी प्रेफरेंस वैसे रिसेंटली लिमिटेड ओवर्स में अगेन T20 क्रिकेट में, बिकॉज वी डोंट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट ओडीआई क्रिकेट अपेरेंटली, तो वो लग रहा है कि जो है चेस भी जाएंगे ये लोग. देखिए ओडीआई में स्कोर बोर्ड प्रेशर थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर्ड टू T20s, as you said, like a 320 target is a whole other equation, right? For us to chase down. मुझे बस इसलिए लगता है कि हम शायद लीन करेंगे टुवर्ड्स चेजिंग, क्योंकि हमारी एक आदत जो बन चुकी है फॉर्मेट मिक्सिंग, कि हम शायद T20 के प्रिंसिपल्स यहाँ भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली आई होप they're smarter than that, but I think the due factor is an important one. उसकी वजह से भी एक हो सकता है कि we might want to bowl first ताकि हम dues so that our bowlers don't have to deal with the due. Another thing that I think बहुत crucial रहेगी हमारे लिए is that जैसे शाहीन को PSL में in the Lahore leg in a couple of games he managed to extract swing in his first spell. तो यहाँ पे अगर उसको वो नहीं मिला, then I think Aaron Finch काफी हमें खा सकता है.
We saw that he struggled against Shaheen in that semi-final. Immediately when the ball came in, and he has that tendency to struggle against the ball coming in from the left-hander. So I think जैसी भी pitch हो, I just hope Shaheen को अपने initial spell में थोड़ी movement मिले ताकि we're able to nullify the threat posed by Aaron Finch. Guys, on this note, I would like to wrap up this episode of CorneredTigers.net podcast. But before we bid our goodbyes, I have to say that it has been a very intriguing discussion with all of you. और जैसा कि मैंने expect किया था कि with CD and Ammar being as our guests for this episode, बहुत मज़ा आने वाला है और उम्मीद है listeners को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा अगर तो वो अभी तक सुन रहे हैं हमारी बकवास. तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा इसी तरह की पॉडकास्ट लेके CorneredTigers.net दोबारा जल्दी वापस आएगा. आई वुड लाइक टू थैंक माय गेस्ट अगेन Ammar and Cover Drive and as always Kenny for being a wonderful co-host. जाने से पहले हमारा जैसा कि Kenny ने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे CorneredTigers.net फोरम को ज़रूर ज्वाइन करें. This is Munna signing off from CorneredTigers.net. Thank you so much. Allah Hafiz.